Good evening, class. This is our class 6th of idioms. ये आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 251 to 300 idioms. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट idioms के साथ. ये है हमारी 251 bag of pawns. Bag of pawns. Bag of pawns. Bag of pawns. What does it mean, bag of pawns? हड्डियों का बैग मतलब extremely weak person. A bag of bone means an extremely weak person. Next is all moonshine. All moonshine. All moonshine. All moonshine. All moonshine. ऑल मूनशाइन का मतलब कोई चीज जो नकली हो, फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर हो, फेक हो, शैम. ठीक है. ऑप्शन डी, जो रियलिटी से दूर हो, नकली हो, दैट इज योर ऑल मूनशाइन. नेक्स्ट आ जाइए. टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट. टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट. टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट. What does it mean? It means to leave a place with a sense of resentment. To leave a place with a sense of resentment. अब नेक्स्ट आ जाइए. ऑफ हैंड. ऑफ हैंड. What does it mean, off hand? Off hand. Off hand. ऑफ हैंड मतलब कि बिना किसी प्रिपरेशन के, विदाउट प्रिपरेशन. ऑफ हैंड मीन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन. नेक्स्ट आ जाइए. अ बर्ड ऑफ पैसेज. अ बर्ड ऑफ पैसेज. बताओ. अ बर्ड ऑफ पैसेज. A bird of passage. A bird of passage मतलब कि one who stays for a short time. Next is count on. बताओ. Count on. Sorry. Count on means depend on. Count on means depend on. Count on means depend on. Next आ जाइए. With a string. With a string. With a string. With a string. विद अ स्ट्रिंग मतलब गिफ्ट और एड विद कंडीशन. किसी को गिफ्ट देना है, कोई मदद देना, बट किसी शर्त पर. नेक्स्ट आ जाइए. टू सेट स्टोर्स बाय. टू सेट स्टोर्स बाय. टू सेट स्टोर्स बाय.
To set stores by. नहीं. To value highly. To value highly. To value highly. Next is to draw the long bow. To draw the long bow. To draw the long bow. It means to exaggerate. To exaggerate. Next is to know the ropes. 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 To know the procedure of doing a job. To know the procedure of doing a job. Next आ जाइए. To give the devil his due. To give the devil his due. To give the devil his due. To be just a person even though he doesn't deserve treatment. Next is in the swim. In the swim. In the swim. In the swim मतलब knowing latest current things. Knowing latest current things. Next आ जाइए. To knuckle under. To knuckle under. To knuckle under. To knuckle under. To submit. To submit. To have a dig at. To have a dig at. To have a dig at. To criticize someone. To have a dig at मतलब to criticize someone. Next आ जाइए. To wake. To wake. यहाँ पे to wake या फिर in wake. WAGUE. बताओ. To wake या फिर in wake. What does it mean? इसका मतलब है फैशन में होना, ट्रेंड में चलना. इन फैशन या फिर इन ट्रेंड. इन फैशन या फिर इन ट्रेंड. ऑप्शन ए. इन फैशन और इन ट्रेंड. नेक्स्ट आ जाइए. 3 hours. 3 hours. 3 hours. What does it mean 3 hours? 3 hour मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. देखने में 3 hour वो रिसाइकल रीयूज वो वाला नहीं है. और ना ही इसमें तीनों में आर आएंगे. ये है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक.
नेक्स्ट आ जाइए, a wild goose chase, 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 a wild goose chase मतलब कि कोई यूजलेस या यूजलेस एफर्ट बोल लो, यूजलेस एफर्ट, और फ्यूटाइल का मतलब ही आपका यहाँ पे या फिर फ्यूटाइल एफर्ट, यूजलेस एफर्ट या फिर फ्यूटाइल एफर्ट, ऑप्शन ए फुलिश, फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज या फिर फुलिश एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट। नेक्स्ट इज टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, to rest on one's laurels, to rest on one's laurels, to rest on one's laurels. It means to cease to strive for further glory, to cease to strive for further glory. Next is raw deal, raw deal, raw deal, raw deal, raw deal, unjust treatment, raw deal मतलब unjust treatment, raw deal, unjust treatment. नेक्स्ट आ जाइए, a forlorn hope, forlorn hope, forlorn hope, forlorn hope, forlorn hope, which has remote chances of success, forlorn hope हो जाए forlorn plan जिसके बहुत कम chances हो success के, which has remote chances of success. Next is printer's devil, printer's devil, printer's devil, printer's devil. An apprentice in a printing office, an apprentice in a printing office. Next is to call on the carpet, 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 to summon for scalding, to summon for scalding, to bring the house down, to bring the house down, to bring the house down, to bring the house down. It
It means to appeal greatly to the audience. To appeal greatly to the audience. Next आ जाइए. To have an edge on. 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 To be slightly better than. To have an edge on means to be slightly better than. Yeah, to have slightly advantage, to be slightly better, to be slightly good, to be have slightly advantage. Yes, जो थोड़ा सा better हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसके उसमें use करते हैं. In sackcloth and ashes. 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 In a state of great mourning. In a state of great mourning. Next आ जाइए. Next आ जाइए. To put two and two together. To put two and two together. बताओ. To put two and two together. Sorry. To conclude, keeping in view the merits and demerits. To conclude, keeping in views the merits and demerits, the advantages and disadvantages. Next आ जाइए. To weather the storm. 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 It means to face a crisis. To face a crisis. To face a crisis. Next आ जाइए. Lump in the throat. Lump in a throat. Lump in the throat. Lump in the throat. It means a highly emotional state. A highly emotional state. A highly emotional state. Next आ जाइए. To fight shy of. To fight shy of. To fight shy of.
टू फाइट शाई ऑफ, किसी को अवॉइड करना, फाइट शाई ऑफ किसी से दूर, खुद से दूर रखना किसी को अवॉइड करना, टू फाइट शाई ऑफ। टू फाइट शाई ऑफ मीन्स टू कीप aloof फ्रॉम, टू कीप aloof फ्रॉम। हाँ जी। नेक्स्ट इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हॉब्सन्स चॉइस बताओ। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, जब हमारे पास कोई चॉइस ना हो, ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड, जब जो जो हमें वन ऑफर किया गया है सिर्फ उसी को लेने का ऑप्शन हो, दूसरा कुछ नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि नो रियल चॉइस, हमारे पास कोई खुद की चॉइस ही ना हो, एक ही है वही लेना पड़ेगा। नो रियल चॉइस एट ऑल ऑप्शन से, या बोल सकते हो डिफिकल्ट चॉइस, चुन ही ना पाए जिसको हम कभी भी। टू हिट इट ऑफ, नेक्स्ट आ जाइए। टू हिट इट ऑफ, टू हिट इट ऑफ, टू हिट इट ऑफ, टू हिट इट ऑफ। टू हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ का मतलब लड़ना किसी के साथ, टू फाइट या फिर टू क्वारल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए। टू वाइट वॉश, टू वाइट वॉश, टू वाइट वॉश। वाइट वॉश करा के क्या करते हैं हम? वाइट वॉश कब कराते हैं? जब हमारी दीवारें गंदी हो जाती हैं तो वाइट वॉश करा के उसके सारे दाग छुप जाते हैं, दाग धुल जाते हैं। तो बाय दिस मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? टू वाइट वॉश। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? It means to retrieve damaged reputation. To retrieve damaged reputation. Damaged reputation को retrieve करना। Next आ जाइए। Within an ace of. Within an ace of. Within an ace of. Within an ace of, बहुत पास। Within an ace of, very close. Very close. Next आ जाइए। To keep an open mind. 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 बताओ। To come to no decision on a subject until one known all the fact. किसी भी डिसीजन पे ना आना जबकि एक बंदे को उसके सारे फैक्ट पता ना हो। Open questions. Open questions. Open questions. Open questions. Open questions. A question without any generally agreed answer. A question without any generally agreed answer. Next is on one's metal. On one's metal. On one's metal. On one's metal. बताओ। Roused to one's best. Roused to do one's best. Roused to do one's best. Roused to do one's best. नेक्स्ट आ जाइए। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये हमने पहले भी किया हुआ है। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, बताओ। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये हमने शायद प्रैक्टिस सेट्स में किया था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग।
To keep the pot boiling. अपना इंटरेस्ट बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाइए, grist to one's meals, grist to one's meals, grist to one's meal, grist to one's meal. इट मीन्स यूजफुल फॉर वंस पर्पस, किसी के पर्सन के लिए जो यूजफुल हो उसके लिए यूज कहते हैं ग्रिस्ट टू वंस मील। नेक्स्ट आ जाइए, कंगारू कोट, कंगारू कोट, कंगारू कोट, कंगारू कोट। अनऑफिशियल कोर्ट, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है आपका अनऑफिशियल कोर्ट। नेक्स्ट आ जाइए, वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग। wool gathering. To engage in idle or aimless daydreaming, to engage in idle or aimless daydreaming. Next आ जाइए, between Skyla and Charybdis, between Skyla and Charybdis, बताइए। बिटवीन डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर बिटवीन डेंजर, बिटवीन डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर बिटवीन डेंजर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाइए, अचील्स हील्स, ये हमने किया हुआ है पहले भी, अचील्स हील्स, अचील्स हील्स, किसी का वल्नरेबल पॉइंट, दुखती नस, अचील्स हील्स, अचील्स हील्स। One's vulnerable or susceptible spot या susceptible point, Achilles heels. To know which side the bread is buttered on. To know which side the bread is buttered on. बताओ, to know which side the bread is buttered on. To know which side the bread is buttered on. Side the bread is buttered on. To know where one's interest lies, जानना कि किसी का इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, where one's interest lies. To eke out, to eke out, to eke out. किसी का सप्लीमेंट बनना, to supplement. To eke out means to supplement. Next now, to be in the doldrums, to be in the doldrums, to be in the doldrums, to be in the doldrums। बताओ, to be in the doldrums।
मतलब कि बहुत लो स्पिरिट्स में होना, लो एनर्जेटिक फील ना करना, टू बी इन अ लो स्पिरिट्स, टू बी इन द डोल्ट्रम्स। नेक्स्ट आ जाइए, विल्ड कैट स्ट्राइक, 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 विल्ड कैट स्ट्राइक। It means strike not approved by trade union. Strike which is not approved by trade union, that is called wildcat strike. Next आ जाइए, blind alley, blind alley, blind alley, blind alley, blind alley. To blind alley बताओ, पहले आप बताओ। मतलब कि कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्शन, अनप्रॉफिटेबल एक्शन जो बेनिफिशियल ना हो, tied in the, tied to the apron strings of, next बताओ, tied to the apron strings of, 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 sorry, to be dominated by, to be dominated by। नेक्स्ट आ जाइए, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ये तो बहुत बार किया हुआ है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, बताओ, बहुत बार किया हुआ है हमने। within a stone's throw, at a very short distance, within a stone's throw मतलब at a short distance। अब बताओ, fling away, fling away, बताओ, fling away, fling away, बताओ। इट मीन्स फ्लिंग अवे का मतलब होता है आपके पास किसी चीज से छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, टू थ्रो समथिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और मेरा गला आज ठीक नहीं था तो उतने पोटेंशियल के साथ मैं ये क्लास नहीं ले पाई, सॉरी फॉर दैट, बट विद इन 2 to 3 days ये सही हो जाएगा। टिल देन प्लीज ट्राई टू एडजस्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।